What's happening? I hope everyone's doing fine. Welcome to my YouTube channel. Yes, my name is Raj and आज हम बात करने वाले हैं KTM 390 Adventure की. Yes, which is a more of an upgrade from the KTM Duke 390. Also, you guys must be wondering कि मैं अभी गोवा में था, मुंबई कब आया, Day 2, Day 3 videos कहाँ है? Yes, don't worry, videos will come. But I thought this was more of a urgent thing for me because 390 Adventure के लिए काफी लोग रुके थे. I was more keen on the 790 Adventure. Well, this video is not about that. उसके भी मैंने फुटेजेस लिए हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में करूंगा. टुडे वी ओनली डिस्कस अबाउट KTM 390 एडवेंचर मोटरसाइकिल. First of all, most important, let's talk about the design of this motorcycle. Yes, KTM 390 Adventure has been tried to look a bit like its sibling or elder sibling 790 Adventure, and according to me 790 Adventure is a dope motorcycle. Yes, it is a rally approved, very well tested motorcycle, and I wish 790 का launch होता, I would have considered. Honestly guys, I was waiting for 790 Adventure for literally a year and I thought ये launch हो जाएगी and I'll be able to buy it, but वो नहीं हो रही है. Hopefully 2020 March या April के बाद इसकी शायद booking start हो, God knows. Once we get the information, I'll definitely highlight on my channel. मुझे इस बाइक की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी because I always prefer a bike which has a little bit of a motocross feel. Yes, अगर आप ऊपर से देखेंगे इसकी टैंक का जो शेप है, literally you can slide ahead of the motorcycle taking those hard corners and come back. तो मुझे मोटोक्रॉस की हैंडलिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगी. Once I saddled on this motorcycle, yes, I was surprised कि हैंडल बार ब्रॉड लग रहा है and the feel was really nice, especially for a guy of my height, which is 5 feet 8.5 inches. बात करते हैं इसकी कंफर्ट लेवल की. सीट मुझे इतनी सॉफ्ट नहीं लगी जो होनी चाहिए थी, so I'm sure people will be prepping that, but I'm sure KTM ने माइंड में रखा था अगर सीट और थिक करते तो हाइट बहुत बढ़ जाती, because yes, this is a tall bike. But hey, you know what? Adventure bike is nothing to do with your height. If you're a good rider, you'll maneuver this bike like a piece of cake. So most anticipated KTM 390 में यही था, उसके front suspension और rear suspension की setting. Yes, finally WP Apex has been installed on this motorcycle, and that is the cherry on the cake which people wanted. एक चीज़ मैंने नोटिस की front forks पे, there was no adjustment tool. आइकमा के कुछ वीडियोस में मैंने नोटिस किया था कि ऊपर दो टूल्स थे फॉर डैम्पनिंग एंड रिबाउंड सेटिंग्स, जो इस बाइक पे मुझे नोटिस नहीं हुई. ड्रॉबैक की बात करते हैं तो इंजन सेम रखा है KTM Duke 390 का. हाउएवर द पर्सन देयर टोल्ड मी दैट द स्प्रॉकेट्स हैव बीन चेंज्ड, द होल मैपिंग वुड बी रीडन. नाउ ये कितना श्योर है देखा जाएगा, बिकॉज जब तक ये बाइक मेरे हाथ में नहीं आएगी, जब तक किसी एडवेंचर राइडर के हाथ में नहीं आएगी, वो इसे एक्चुअली जज नहीं कर पाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है. सो बात करते हैं एलॉय व्हील्स की, which was also disappointing for some people because people were expecting spoke setup along with tubeless setup. But I asked the representative that the alloy looks of a different quality. He's like, yes, this is a different quality alloy and it is a road biking motorcycle which has adventure features in it so that you can do a bit of terrain. करते हैं बात आगे की हेड की. Yes, it looks quite similar to the 790 Adventure and that's what attracted me because I kind of like that look. बहुत लोग जो टोरिंग करते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो वाइजर है लिटरली उनके फेस लेवल तक आए. आई यूजुअली डोंट प्रेफर दैट बिकॉज आई डोंट वांट माय विजन टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड विथ अ फाइबर इन फ्रंट ऑफ मी. सो दिस इज अ बिगिनिंग वर्जन ऑफ अ एडवेंचर सिंगल सिलेंडर क्लास मोटरसाइकिल इन दिस सेगमेंट. अगर आप इसे कंपेयर करो तो वी कैन कंपेयर दिस मोटरसाइकिल विद द रॉयल एनफील्ड 400cc मोटरसाइकिल बिकॉज वो भी सिंगल सिलेंडर है और वो भी एडवेंचर रेडी है. तो KTM ओनर्स जिनके पास 390 होगी वो इस बाइक से थोड़े डिसअपॉइंट होंगे बिकॉज दे आर not getting much of upgrades. They're just getting the forks, they're getting few things here and there, they're getting a bigger sprocket. Engine mapping की मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, जब तक मैं चलाऊंगा नहीं मुझे पता नहीं चलेगा, बट उन लोगों ने कहा है कि इसकी मैपिंग अलग टाइप की होगी. If I take an example of Kawasaki versus 650 and Kawasaki Ninja 650, दोनों का इंजन सेम है, however the transmission and specs are a little different. So Ninja is a sports bike and Versus is a sports tourer. So I don't know if the company for KTM 390 Adventure can turn the mapping to a much torquey engine. देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है. Now talking about one thing that yes, they have added a traction control to this motorcycle and I'm pretty excited to ride that. So while talking about the weight and everything, this bike looks really light.
feels nimble. 790 एडवेंचर लॉन्च होने वाली है, उसके ऊपर सारी है 1090, 1190, 1390 which are the famous most iconic motorcycles of KTM. Why would they launch another parallel engine for 400 or 500? वैसे ही जिन लोगों के पास 390 KTM थी उनको पता था कि उसमें पावर डिसेंट है. माउंटेन्स में पावर से ज़्यादा टॉर्क और स्टेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. Basically, I think KTM invented a bike which is decent enough to do Ladakh and some rough terrain, but it's not a full-fledged adventure-ready motorcycle. टॉकिंग अबाउट द व्हील्स, आफ्टर मार्केट व्हील्स डेफिनेटली मिलेंगे मार्केट में. काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है कि इस साइज के रिम्स ऑलरेडी इंटरनेशनली अवेलेबल है. तो कई लोग रिग्रेट करते हैं जब स्पोक व्हील्स होते हैं विच आर नॉन ट्यूबलेस, वो रिग्रेट करते हैं बिकॉज जब पंचर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल मी, इफ माई इंटरसेप्टर हैज अ फ्लैट ऑन द टेरेन, आई एम डेड बिकॉज इट इज़ अ हैवी बाइक, राइट. सो इसका एक और एडवांटेज है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक KTM लॉन्च अ मोटरसाइकिल इन अ रेशियो ऑफ 80-20. 80 is a road riding, bad roads, and 20 is a rough terrain which you would prefer riding with alloy wheels. Price के बारे में भी कई लोग बोल नहीं पाए. All the people there who were shooting and looking at the bike, and when I sat on the motorcycle, my feet go perfectly down on one side, on other side they tiptoe a bit. Yes, 200 mm की ground clearance है which is decent enough. अगर adventure aspect में देखा जाए तो front 21 rear 19 का set बहुत प्यारा होता है any motorcycle पे. However, if they would have done that, ये bike थोड़ी और ऊंची हो जाती and फिर short riders like me would have had a problem. So I think that's the reason the tire size are not exactly that, but I think it's completely in your hands. It's orange and there's a white. I personally liked the orange and the white both, but मेरा white पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान था because I can imagine if you put a white beak on it and good bark busters, it look dope. अगर आप चाहते हैं एक single cylinder motorcycle with WP shocks, that's the most catchy thing on this motorcycle. Finally, we have adventure shocks in front and rear apex, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हो इस मोटरसाइकिल पे because it's going to be lighter, nimble and flickable also. But you have to be careful because 390 actually is a beast of a motorcycle when it comes to power delivery. So मेरे हिसाब से KTM ने पूरी कोशिश की है कि एक existing मोटरसाइकिल को बेटर बनाने के लिए towards the adventure side. It's not a pure adventure motorcycle, but they tried to make it towards the adventure by changing the forks for sure, changing a bit of the ergonomics because पूरा stance बदल गया है बाइक का. ब्रॉडल हैंडल बार है, फ्रंट वाइजर अलग है, लुक अलग है. The instrument cluster is the same of the 390 KTM, and overall जो sitting stance है, this bike feels a bit bigger than the 390 KTM Duke, and that's what I liked about it. It has made more space for a rider to shift ahead and behind. ऑल्सो रेयर सिटिंग के लिए थोड़ी जगह बड़ी है, बट अगर आप उसे सिटी में चला रहे हो तो पिलियन फ्रेंडली है. बट इफ यू प्लानिंग टू डू सम टूरिंग ऑन इट, आई वुड नॉट रिकमेंड कि पिलियन फ्रेंडली है. बट येस, द रेयर पोर्शन इज सो नाइसली मेड that now you can have your luggage system with a top box. Bike already comes with a skid plate below, but if you're going to go hard, you can definitely modify. So customization की boundaries बहुत है KTM 390 Adventure में जो आप कर सकते हो इस मोटरसाइकिल पे. So KTM has definitely tried to make this motorcycle a bit towards the adventure friendliness when it comes to luggage system, taking a bit of off-road, taking a bit of rough terrain, enjoying your ride, going full throttle because this is a beast of a motorcycle. अगर मुझे कहा गया कि अगर आप इसे कंपेयर करो BMW 310 GS से, so that would be not sensible because 310 and 390 में थोड़ा फ़र्क है. But if you still compare it, I would say that I would go for KTM 390 Adventure over the BMW 310S only for the engine specifications because otherwise the GS का frame जो है BMW पे वो decent enough है. Quickly बात कर सकते हैं हम इस बाइक पे क्या mod कर सकते हैं. I just thought I'll share this idea with you because you can definitely put risers on this motorcycle because handlebars already coming here with the risers, it will be higher. That will help you for saddling in rough terrains, which will be absolutely a thrill to do on this motorcycle. Secondly, you can add on some heavy duty bark busters so that you can protect your knuckles while crashing. Third, you can add those saddle stays or a rack for your luggage system. Fourth, एक engine cage guard आप definitely अकॉर्डिंग टू द बाइक बना सकते हो. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको रीमॉडल कर सकते हो, उस पर बिठा सकते हो. इसकी TFT स्क्रीन बहुत अच्छी लगी मुझे, एकदम राइट पोजिशनड है एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इफ यू पुट अ रैक अबव दैट एंड पुट योर नेविगेशन सिस्टम, दिस बाइक इज रेडी टू टूर. So I would not give my verdict right now that this bike is good or not because I want to actually ride it, have a feel of it and then talk about it. और ज़्यादा अच्छी हुई तो खरीद भी लेंगे. एडवेंचर बाइक मिसिंग है, राइट? So this was all about KTM 390 Adventure. I hope you guys like this video. Press the thumbs up button,
subscribe to my channel. And before I end this vlog, yes, IBW के भी vlogs आने वाले हैं, so stay tuned for that. And as usual, eat well, sleep well, be good. Signing off, Ride with Raj.